over 10 years of and today she's just here to help us and understand the importance of bone and joint health and how we can take care of our bones and joints by having the right kind of nutrition. So over to Navneet, if we can start off. Yeah, thank you so much, Chitra. And as introduced, I'm Navneet Chima. I'm a certified nutrition advisor. And today we'll be talking about bone and joint health. And so what we'll do is we'll have a quick presentation, and plus अगर आपको कोई भी questions है, you want to, कई बार क्या होता है कि जैसे presentation चलती है तो कुछ questions दिमाग में आते हैं but then बाद में हम भूल जाते हैं. So you can shoot your questions in the chat, or any experience you want to share, you can do that in the chat option, and then later on we can cover the questions. So जैसा आप देख रहे हैं, why so you know normally हम जब बात करते हैं bone and joint health की, it's important हर किसी के लिए, for all men and women, it's both, सबके लिए important है. But women, because हमारी थोड़ा सा issues ज़्यादा रहते हैं with bone and joint health. Important क्यों है? Why is it important to take care of our bones and our joints? Because you know अपनी स्पेशली अगर बोन्स जैसे अपने हाथ पैर हैं, यू नो बोन्स या जॉइंट्स में कोई भी तकलीफ होती है, स्पेशली जॉइंट्स में, सो हमारी पूरी मोबिलिटी इफेक्ट हो जाती है. सब मोबिलिटी इफेक्ट होती है तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर हम चलने में हमें तकलीफ होगी, घुटने में दर्द होगा या कंधे में दर्द होगा, हाथों में दर्द होगा, तो जो भी हमारे दिन भर के यू नो डेली रूटीन में हमारे वो अड़चन आती है. लाइक सपोज यू हैव diabetes, you can still go around it. Again, it's not good, but you know it still can go around. But अगर एक हल्का सा भी दर्द होगा हमारे हाथ में, एक उंगली में भी, तो it will really affect our daily routine, you know. So एक बहुत quality of life हमारी बहुत affect हो जाती है when you know we are not having good joint health and bone health. So it's very important to take care of our joint and bone health. Second reason क्या है, अगर हम जब भी हम joints की या bones की बात करते हैं तो पहला correlation क्या होता है, कैल्शियम. And but we should, and always of course we'll see that further कि there is a big correlation calcium depletion या डेफिशिएंसी से बोन हेल्थ में. बट एक और चीज़ है जो हमें नहीं पता कि जब भी हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, यू नो इट अफेक्ट्स आवर हार्ट हेल्थ आल्सो. So indirectly, if your bones are not healthy, your heart is also not healthy. So you know that is another reason why it is important. Lower vitamin D levels, again bone health में vitamin D levels, and जो आजकल हम देखते हैं you know all over, even in the current pandemic situation, vitamin D बोला गया है. Because why? Because जैसे ही आपका vitamin D डेफिशिएंसी हमें होगी, इट अफेक्ट्स आवर इम्यूनिटी बिग टाइम. हमारी इम्यून सिस्टम में मेजर रीजन, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विच विल अफेक्ट योर बोन्स ऑल्सो. एंड इट इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर. विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर है आपकी, डायरेक्टली आपका रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर एंड हार्ट डिजीज गोज अप, स्पेशली इन women. So these are the reasons why it is important that we should be taking care of our joint health. And जो another reason हमने देखा है, like जो trends, I've been in this field for 15 plus years now, and मैंने personally ये trend क्या देखा है. If you see this slide here, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो you know at the age of 30, 25, 30, 35 के बीच में हमारी जो बोन डेंसिटी है, हमारी बोन्स क्या है, डेंस होती है. अगर आपने कभी भी एक चौक देखा है तो चौक बड़ा ब्रिटल होता है, आप हल्का से यू नो हाथ से वो टूट जाता है. आप लकड़ी को ट्राई करो तोड़ने की, नहीं टूटेगी. वाई? बिकॉज दैट बोन, द लकड़ी वुड जो है डेंस होती है. सेम वे हमारी जो बोन्स हैं, देयर इज एन ऑप्टिमम पीक बोन डेंसिटी हम बोलते हैं, ऑप्टिमम बोन डेंसिटी, विच वी रीच एट द एज ऑफ 20-30 फॉर विमेन. बिटवीन 20 to 30, आइडली अराउंड 30 के आसपास हमारी पीक बोन डेंसिटी होती है. एंड उसके बाद इट स्टार्ट्स फॉलिंग, एंड एट द एज ऑफ 60-70 इज जब आपकी बोन्स ब्रिटल होनी स्टार्ट होती है. यू नो ये एज अगर आप देखें जहाँ ये स्लाइड हो रही है, दैट इज व्हेन आइडली इन एन आइडियल सिचुएशन आपकी बोन्स वीक होनी स्टार्ट होती है. देन यू गेट, यू नो हम सुनते हैं कि उनकी दादी माँ गिर गई. लाइक आई रिमेंबर माई grandmother, she was like in her 70s and she fell down at home only and she broke her hip bone.
एंड फिर वो बहुत तकलीफ, तो दैट इज यू नो बोन, वो ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है उस एज में जाके, अराउंड 70s 80s। आई रिमेंबर इट वाज व्हेन शी वाज इन हर टचिंग हर 80s। बट जो ट्रेंड हम अब देख रहे हैं, व्हाट आई हैव सीन इन द लास्ट 10 years एंड स्पेशली नाउ, कि वन, वी नेवर रीच दैट पीक बोन डेंसिटी। यू नो हमारी बोन डेंसिटी पीक पे पहुंचती ही नहीं है। जो पीक यहाँ पे है तो वी स्टॉप समवेयर हियर, विच मीन्स अगर आपकी बोन्स एकदम अच्छी नहीं हुई, डेंस पीक डेंसिटी पे नहीं पहुंची, तो वो जो बोन लॉस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, विच मीन्स कि जो हमें बोन रिलेटेड या जॉइंट रिलेटेड इश्यूज 60 70 80 में होने चाहिए, वी सी दैट हैपनिंग with men as well as women, but mostly more so in women in the age of 40 50 itself, and now scarily even younger. So हम लोग कई बार we do this bone density tests, camps करते हैं जहाँ पे free bone density camps where people come and check. It's a basic test, not like an advanced one. बट हमने ट्रेंड क्या देखा है आजकल कि जो 60 70 साल के 60 साल के ऊपर बुजुर्ग आ रहे हैं, उनकी बोन्स आर हेल्दियर देन द पीपल, you know, the young girls and boys in 28 30 35 also. Uska reason, so that's a scary trend, which means ki these young, the people who are in their 30s and 40s now, उनकी जो बोन डेंसिटी है, जो बोन हेल्थ इश्यूज हैं, वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, जो हम देख रहे हैं। आई मीन माई 40s, आई सी अ लॉट ऑफ विमेन माई एज जिनको ऑलरेडी डिजनरेशन स्टार्ट हो गया, ऑस्टोपीनिया तो हर किसी को है, इट्स वेरी कॉमन नाउ, विटामिन डी डेफिशिएंसीज हैं, सो दैट्स द ट्रेंड वी सी इन बोन डिजनरेशन। Another reason for that is obesity. We see, you know, जो average weight है ज़्यादा हो रहा है, there is a lack of nutrition, स्पेशली अगर हम यंग एडल्ट में देखें, 30s 40s में 20s में हमारे बच्चे देखें, तो यू नो दे आर नॉट हैविंग इनफ न्यूट्रिशन जितना उनको खाने में से मिलना चाहिए, फॉर वेरियस रीजन। जंक फूड ज़्यादा आ रहा है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा आ रहा है, you know, not having fresh home cooked food, we are eating out more, especially in cities like Bombay. So all these factors lead to lack of nutrition. Another major thing is lack of exercise. हम पिछले 6 महीने से तो सबकी lack of exercise हो गई है, we are sitting, and especially otherwise also we see ज़्यादातर sitting jobs हैं। हम छोटे थे तो हमें हमारे पेरेंट्स यू नो घर पे डांट के घर पे बिठाते थे कि पूरा दिन बाहर खेल रहे हो। आजकल आई एम सीइंग विद माय चिल्ड्रन एंड आई सी पीपल, हमें डांट के उनको बाहर भेजना पड़ता है खेलने के लिए, दे आर हैप्पी सिटिंग एट होम। सो देयर इज अ ह्यूज लैक ऑफ एक्सरसाइज। एंड विद women also, once you get married and you have young kids, टाइम नहीं मिलता है, एक्सरसाइज नहीं होती। वाई एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट? जितना आप एक्टिव होगे बचपन में भी एंड एज यू ग्रो, उतनी आपकी बोन डेंसिटी बेटर होगी। यू नो व्हेन यू आर वेट बेरिंग एक्सरसाइज, आप वॉकिंग भी कर रहे हो, तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे आपकी बोन स्ट्रॉन्गर होंगी। फूड अडल्ट्रेशन, वी सी अ लॉट ऑफ इश्यूज इन फूड, लॉट ऑफ जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, you know, even in your cleaning this, they affect our hormones and they also affect our bone density. Plastic we use, all that stuff also leads, and lot of growing stress, not just in women, in men and young children also, so that also affects. So these are various reasons कि जो हम देख रहे हैं कि bone density, bone health and joint health, and the main thing for bone health is your bone density is you know, it's a challenge यहाँ ये है। नाउ मेन थिंग, हमें जैसे हम सबको पता है कि कैल्शियम एक चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड इफ़ यू सी एट ऑल एजेस यू नीड इनफ कैल्शियम। यू नो जो पहले हम बोलते थे कि 30 के साल के ऊपर हमें कैल्शियम लेना चाहिए, दैट्स नॉट ट्रू, वी शुड स्टार्ट यंग। For all children, if you have young children at home below the age of 12, start giving them enough calcium at that age itself, because they are in that building stage, boys and girls, especially in their puberty years and adolescent years, they really need good amount of calcium, even for girls and even for boys, because that's when they are growing. So उनकी requirement है 1300 mg per day। कैसे मिलेगा खाने में से, आई विल कम टू दैट। एंड फॉर वुमेन इट इज 1200 mg पर डे। हर रोज हमें 1200। कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, बिकॉज यू नो पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर है।
बट सिर्फ कैल्शियम ज़रूरी नहीं है, वी नीड इनफ विटामिन डी ऑल्सो। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है? आपने सपोज 1200 mg कैल्शियम ले भी लिया, बट इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, यू आर नॉट हैविंग इनफ विटामिन डी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा. So that's why it's important. So you need to have a combination of both vitamin D and calcium for the calcium to be absorbed in your body. So this is the kind of calcium we need on a daily basis. Now yeah, now okay, how much calcium, कौन से खाने में से हमें कैल्शियम मिल सकता है? So as we all know, milk is the most popular, जो हमें पता है कि कैल्शियम मिलता है, बट कितना? जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, we need 1200 mg कैल्शियम, बच्चों को ज़्यादा चाहिए. So one glass of milk, 250 mg is one glass of milk, would give you around 300 mg of calcium. So अगर आपको दूध से लेना है, you would need to have 4 glasses of milk a day. दही हम देखें तो उतना ही, बटर मिल्क अगेन सेम. Again, when we talk about milk here, it has to be full fat milk. Cheese, 80 grams of cheese is probably a small cube or so. So that much. So you would have to have 3-4 cubes of cheese. Spinach, all leafy vegetables have good content of calcium. But we need to have 1 cooked cup of spinach every day. That would give you around 250 grams of mg of calcium. So अगर आपको 1000 mg भी चाहिए, so you would need to have at least 4 cups, 4 to 5 cups of spinach, or 4 to at least, I think broccoli is higher, methi में भी है. So आप देखें तो these are, of course every food has some amount of calcium. These are the foods which have a high amount of calcium, plus the body also absorbs them. The first thing जैसे हमने देखा, it is not just about कितना calcium हम ले रहे हैं, कितना हमारी body absorb कर पा रही है. So that is also important. Now, so this gives an idea about how much we actually need. Now, some of course would be a good idea to yeah. So vitamin D you need for the absorption. So सिर्फ कैल्शियम लेके कोई फायदा, मतलब उतना फायदा नहीं है if you're not having enough vitamin D also. So now how do we do this? What is the next step? The next step is get some healthy eating habits. If we are just aware of how much we need, if you can just improve our eating habits, some things which we can do, अगर आपने इतना कैल्शियम ले भी लिया, so there are some things which leach or drain the calcium, erode the calcium would be the right word, from our bones, which is one is caffeine. So अगर आप 2 या 3 कप से ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी रहे हो दिन में, that is इरोडिंग. सो आप नेगेटिव में जा रहे हो, आपने 1200 mg कैल्शियम ले लिया, बट अच्छा चाय कॉफी उतना ही पी लिया तो वो चला गया. तो एंड चाय वाला दूध प्लीज काउंट मत कीजिए फॉर कैल्शियम इनटेक. कैफीन आ गया तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. Second thing, aerated drinks if you're having too much of that. Stress agar hai, so if you're having too much of processed, so all this is going to lead to depletion of calcium. We need to take care of preventive nutrition. Why? आपने अभी देखा कि जितना आपका बोन पीक बोन डेंसिटी, ऑप्टिमम बोन डेंसिटी पे अगर आप पहुंच जाते हो, उतना आप बाकी हेल्थ इश्यूज प्रिवेंट कर सकते हो. So it's important to take nutrition at the right time. What is the right time? जब आपको पता चल गया is the right time. The right time is not when you already started facing issues. If you've already started facing issues, increase it so that you can prevent further damage or at least manage that. If you are healthy, that is the right time. If you have young kids at home, the right time to start them on good nutrition. Exercise, weight bearing, even अगर आप walk कर सकते हो, या women we have this myth कि हमें weights या strong exercise नहीं करनी चाहिए. आपको करनी चाहिए, especially if you're in 40s and above. Start doing some weight bearing exercises. YouTube पे आप देख सकते हो, something like where you can pick up weights. Even अगर आपके पास weights नहीं है, water bottle से कुछ basic exercises कर लेंगे, that will help you strengthen your bones. And weight loss majorly. Suppose आप 10 किलो एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हो, दैट मीन्स 24 घंटे आपके जो घुटने हैं, जितने भी जॉइंट हैं, आपकी हड्डियां हैं, वो उतना एक्सेस वेट कैरी कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू हैव अ ह्यूज लोड, स्पेशली ऑन योर जॉइंट्स. तो जो जितनी अपनी हड्डियां हैं, देयर इज अ कार्टिलेज बिटवीन देम. सो वो कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है वेट से, एक्सेस वेट से. सो इवन कैरिंग 10 kgs of excess weight hugely affects your joint health and bone health. So if you need weight loss,
if you are overweight, first step, best thing you can do for your joint health, and especially for joint health, is get rid of the excess weight. We have an excellent weight loss program. I'm not talking about that in this session, but in case you need to lose weight, you can get in touch with चित्रा और माई सेल्फ एंड अंडरस्टैंड अबाउट दैट, बिकॉज हमने देखा है बहुत बार काफ़ी लोगों के घुटने का दर्द वगैरह सिर्फ वेट लॉस करने से ठीक हो गया. So yeah, so these are the things, and we'll just quickly talk about why nutrition and what is the right nutrition you should take. Now here I'm see, okay, now I'll just go back one step and say that why supplements, why do we need supplements? Because यहाँ आप देख रहे हैं, this is the kind of इनटेक हमें चाहिए. हम सिर्फ कैल्शियम की बात करें बट बाकी सप्लीमेंट्स के भी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट पूरा हम डाइट से, इट इज़ अ गुड आइडिया टू इंक्लूड एज मच एज फ्रॉम योर डाइट, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है टू गेट द राइट क्वांटिटीज फ्रॉम अ डाइट. सो व्हाट वी शुड बी डूइंग इज वी शुड बी सप्लीमेंटिंग इट ऑल्सो. व्हाट डज सप्लीमेंटेशन मीन? सपोज यहाँ पे अगर आपने दिन में आप 2 ग्लास दूध पी रहे हो, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल, यू वुड बी हैविंग, चलो आप 1 ग्लास दूध पी रहे हो, देन यू आर हैविंग हर रोज आप 1 कप पालक का खा रहे हो, तो आपको 500 ग्राम यहाँ से मिल गया, एंड अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा आप चीज़ या कहीं कभी कभार आपने ये खा लिया, तो लेट्स अज्यूम कि 600 ग्राम 600 mg कैल्शियम आपको आपकी डाइट से मिल रहा है. बाकी 600 का क्या? सो हर रोज 600 की डेफिशिएंसी करिए. सो व्हाट वी से इज, वो जो 600 है उसको आप सप्लीमेंट कीजिए, फिल अप द गैप जो आपकी डाइट और आपकी रिक्वायरमेंट में रह रहा है ऑन अ प्रिवेंटिव लेवल. एंड उससे आपका क्या होगा, यू विल बी एबल टू मेंटेन गुड जॉइंट एंड बोन हेल्थ. सो दीज आर सर्टन सप्लीमेंट्स वी रेकमेंड. नाउ दीज आर बेसिक सप्लीमेंट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे हमने देखा कैल्शियम. नाउ वी टॉक अबाउट हियर, अगर आप यहाँ देख रहे हैं, दीज आर ऑल न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट्स. वाई न्यूट्रलाइट? बिकॉज जब हम सप्लीमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, it's a good idea to have supplements which are natural. Why? Because आपकी body उनको, when you take supplements which are synthetic, they are made in a lab, so your body treats it like medicine, which is toxic. But when you take supplements which are natural, which are derived from natural sources, the body treats it like food. So when your body treats it like food, so there is no toxic load and it is safe for your body, and absorptions are higher, and there are no side effects at all. So Nutrilite as a brand, it's a 80-year-old brand. इनके खुद के फार्म्स हैं जहाँ पे ये सारी सब्जियां उगा रहे हैं, एंड फिर उससे ये सप्लीमेंट्स बनते हैं. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल women at all ages is the calcium supplement. Now हमने क्या बात की, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए. Now this supplement has calcium, it has magnesium, it has vitamin D, and it has zinc. So it has all the 4 nutrients जो हमें चाहिए. So if you take one, and the best thing is इसका जो tablet है, it's 80, so one tablet gives you 200 mg of calcium, which means uh, 2 tablets a day, and the absorption is very high. So आपको पूरा 200 mg calcium मिल जाएगा. So 2 tablets a day, 400. अगर आपको पता है आपका intake कम है, you can take up to 3 to 4 tablets a day also. But ideally 2 tablets a day will give you your daily, जो recommended daily allowance होता है of calcium as well as vitamin D. So आपको absorption issues नहीं आएंगे because you're getting both the things together here. So this is one supplement. What age? About 12, everyone. For younger kids, for girls or boys younger than 12, we have a chewable calcium as per their requirement. 12 से ऊपर हर किसी को ये लेना चाहिए. Men, women, nowadays we see men are becoming very deficient. आप कोई भी blood test, 90% of the people we know men are deficient in vitamin D and vitamin B. One major reason is lack of exercise, lack of sunlight. हम सुबह अपनी गाड़ी में बैठ के ऑफिस चले जाते हैं. आजकल तो हम उतना भी ऑफिस में, मतलब वो जो गाड़ी में धूप मिल रहा है लोकल ट्रेन में, they are just sitting at home and working 12, 14, 15 hours a day. I mean, in the past 6 months, and that's taking a toll on our bone health and joint health. आप बैठे रहते हो, आपके joint move नहीं होते हैं, तो stiffness आ जाती है. So one thing is calcium. So this takes care of all your calcium requirements. Most of your bone issues this will help you with that. Then additionally, protein. We need enough protein.
नाउ व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर जॉइंट एंड बोन, जो भी हमारी बॉडी है हर किसी में प्रोटीन लगता है, तो इवन अपना बोन जनरेशन के लिए भी प्रोटीन लगता है, जो बोन का मैट्रिक्स है उसके लिए प्रोटीन्स लगते हैं। सो मैट्रिक्स नहीं बनेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होएगा, सो वी नीड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इवन योर कार्टिलेज, इसके लिए हर चीज़ के लिए यू नीड प्रोटीन। सो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगेन, whatever is your requirement, ideally you need 1 gram per kg of body weight, so उसके हिसाब से जितना आपको चाहिए, at least 2 to 3 scoops of this, तो आपकी 30 to 40% of protein requirements यहाँ से पूरी हो जाती है। Again, this is a plant-based protein, no artificial flavors, colorings, preservatives, nothing, no taste. तो आप आटे में या किसी भी चीज़ में मिक्स कर दोगे तो उसका टेस्ट आ जाएगा इसमें। So this is the protein, which is a basic supplement. Then we come to bones और joints are two different things. So bones के लिए हमें कैल्शियम लगता है। joints क्या है? हर बोन, जहाँ भी आपकी दो बोन्स हैं, ये दो बोन्स हैं, ये दो बोन्स हैं, आपका घुटना है, हर दो बोन्स के बीच में देर इज अ गैप एंड देर इज अ कार्टिलेज। नहीं तो अगर आपकी बोन्स टच होंगी तो देर विल बी फ्रिक्शन एंड देर विल बी पेन। सो एवरी बोन जॉइंट्स, इवन हर छोटे से, इवन योर बैक बोन, ऑल आर जॉइंट्स हैव अ कार्टिलेज बिटवीन दैम। एंड जो अगर हमें पेन होती है, स्पेशली घुटने में दर्द होता है, वो कब होता है? जब आपका वो जो जॉइंट कार्टिलेज है वो wear and tear हो जाता है। So along with the bone, we need to take care of the cartilage. So one way of taking care of that is having omega-3. This is an anti-inflammatory. जब भी आपके बोन में कोई जॉइंट्स में कोई इशू होगा, फर्स्ट थिंग इज वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, which will lead to the pain. And this helps in lubricating your joints. So omega-3 is an absolute must. Plus it has a good amount of vitamin D also, so it takes care of your vitamin D as well as the omega-3 fatty acids. Again, it comes from a very healthy source, एंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है, 1 टैबलेट विल गिव यू, अगर आप खाने से लेने जाएं omega-3, जो हमारी डाइट है, यू वुड नीड अराउंड 30 ग्राम ग्लासेस ऑफ मिल्क, और यू वुड नीड फ्लैक्स सीड्स इज हाई इन omega-3, बट आपको बहुत भारी मात्रा में फ्लैक्स सीड खाना पड़ेगा, सो यू कैन सप्लीमेंट विद दिस। And then we come to a specific product. If you've already started having issues in your joint, अगर आपको osteoarthritis या arthritis की शिकायत होनी start हो गई है, or you've had a very active lifestyle, आपने बचपन में बहुत फुटबॉल खेला था, एथलीट्स रनिंग करते हैं आप, या आप ओवरवेट हैं, so for especially knee pain के लिए, so glucosamine is a specific product for that, which can help you prevent, or even if you've already started with knee pain, it can give you relief. In fact, Chitra has found very good relief. She's been using this, so we'll just quickly share her experience. So these are the basic supplements, along with exercise and weight loss and proper diet, which can help you take good care of your bone and joint health. So that's all from the presentation point of view. So what we can do now is we can just quickly hear from Chitra about her experience, and in case any of you have any questions, we can answer that for you. Sure. Thanks. Yeah. Thanks, Navneet. So basically, I mean, as Navneet has very beautifully explained about कि हमारे घुटनों में प्रॉब्लम क्यों होती है, या आई मीन वेयर एंड टेयर जो होता ही है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, एंड जब एक्चुअली दर्द शुरू हो गया था, दिस वाज अबाउट लाइक ऑलमोस्ट 8-9 years बैक, मुझे समझ ही नहीं आया था कि इट इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एंड धीरे फाइनली अबाउट 8-9 months बैक आई वाज डायग्नोज्ड विद आर्थराइटिस, एंड तब मुझे जाके पता चला कि हाउ आई मीन लकीली आई गॉट इन टच विद नवनीत, एंड दैट इज व्हेन आई गॉट टू नो कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी रादर हमारे जॉइंट हेल्थ एंड बोन हेल्थ, नॉट ओनली दैट ओवरऑल हमारे वेलबींग के लिए कितना फायदा करता है, एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग ऑल द फाउंडेशनल सप्लीमेंट्स, प्लस especially मेरे knee के लिए I started using glucosamine, and I think now the doctor had suggested me certain medicines, but other than that I also started using these supplements, which has given me a lot of relief, and मतलब काफी मुझे फायदा हुआ है, and I feel more energetic basically. एंड जो मुझे वो मतलब किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी पेन होता है तो हमें लगता नहीं है कि हम एक्टिव हैं, एंड दैट्स व्हाट कॉजेज अस टू
बिकम मोर लेथार्जिक, या एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम जीना शुरू करते हैं क्योंकि वो दर्द हो रहा है. एंड वो इट इज लाइक अ साइकिल, विशियस साइकिल, जहां हम ज्यादा और भी वी आर गेटिंग बैक इनटू दैट नेगेटिव फिजिकल स्टेट ऑफ दिस थिंग. So that is when I found relief, and that is I